Welcome friends. Today we are going to learn 1.4 practice set, which is based on the previous practice sets, but you can see here some all the examples are different. How different? Those problems or those questions are not actually linear equation in two variable. Okay, so they have given in different you can say different format, so we have to convert them into linear equation into variable, and then you can solve. Okay, so only some steps are ahead. Okay, actually those questions are similar with the previous questions, but only the different is we have to convert them, right? So suppose the first question is that solve the following simultaneous equations, and first question is the question number first, that is 2 upon x minus 3 upon y is equals with 15. This is this is equation first. 8 upon x plus what 5 upon y is equals to 77, right? Okay, so you can see actually this type we have seen this type of question. I think on page number first you have given some questions which that was the question was for is this equation linear equation or not, right? And we have written there what, no, this is not linear equation. It means this is not linear equation. Both the equations are not linear equations, but we can convert them in linear equation into a. How to convert? Actually, can I write 2 upon x as 2 into 1 upon x? Definitely yes. Minus how? 3 into 1 upon y is equals to 15. That will be as it is, right? Second equation, tell me 8 into 1 upon x, is it right? Yes. 5 into 1 upon y, right? Okay, this will be as it is, right? 77 will be as it is. Now you can see here is 1 upon x, here is also 1 upon x. Means 1 upon x is common in both equations. Here is 1 upon y, here is also 1 upon y. Means that is also common in both equations. So we can take a letter for 1 upon x for both and another letter for 1 upon y, 1 upon y. You can take any letter. आप सिर्फ x और y मत लो because it is already here, right? So suppose we will take m and n, right? So suppose you have to write this statement. Suppose 1 upon x is equals to what? M, and 1 upon y is equals to n, right? So we will use m instead of 1 upon x and instead of 1 upon y, right? Okay, so how? 2m minus 3n is equals to 15, is it right? Okay, I use m instead of this, so 2 into m, that is 2m, minus will be as it is 3 into n, so 3n, and is equals to 15 as it is. This is equation number first. Now it is in the form to solve, right? Okay, second, tell me 8 into what? 8m plus 5n is equals to what? 77. Equation number second, right? Okay, now 2m minus 3n is equals to 15. Equation first. 8m plus 5n is equals to 77. Equation second. But there is no any similarity. Suppose it is 3n, it is 5n. No same. Means we cannot cancel, right? Here 2m, 8m. We can cancel, we can convert 2 into 8 by multiplying 4. Right? Means when we multiply this 2m by 4, it will be 8m, and after subtraction we can cancel m, we will get n, right? We can solve like this also, or you have another option also. When we multiply equation first by 5 से अगर आप इसको multiply करते हो 5 3 जा 15 मिलेगा, right? और सेकेंड को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 जा 15 मिलेगा. ऑलरेडी इनका साइन क्या है? अपोजिट है, तो 15n कैंसिल होगा. कैंसिलेशन में ये उसको डिवाइड करेगा, आंसर करेक्ट आ जाएगा. या फिर अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करो,
इसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 8m हो जाएगा और सब्ट्रैक्शन में कट होगा, राइट। सो वी विल यूज दैट मेथड। ओके, सो मल्टीप्लाई इक्वेशन विच फर्स्ट बाय which by 4. Why 4? Because I want 8 here, and how I will get? By multiplying 4, right? So multiply equation first by 4. So tell me, when we multiply 2, so it will get 8m minus 4 3s are 12n is equals to 4 15s or 15 4s are, that will be 60. Equation number 3. Now can I say equation 1 is equals to equation 3rd? Definitely, because this is the modification of this equation. Okay, so 8m 5n 12n, okay, 77 60, no problem. अब हम इसको क्या करेंगे कि आपको यहाँ पे क्या करना है, उसका सब्ट्रैक्शन करना है। ओके, सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन, विच इक्वेशन? थर्ड फ्रॉम सेकेंड। ओके, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम व्हाट? सेकेंड। आप ऐसा मत लिखो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 एंड सेकेंड, ऐसा मत लिखो, फ्रॉम लिखो। मतलब 2 से हमको क्या करना है, थर्ड माइनस करना है। तो व्हाट इज सेकेंड इक्वेशन? 8m प्लस 5n is equals to 77. This is equation second. From second, no? So second is here. Third, what is third equation? 8m minus 12n is equals to 60. Now I think we can change the sign, right? So it is positive, it will become negative. Negative become positive. It is positive become negative. So 8m cancel 8m. So 5 plus 12, what will be? 17, right? And now 17, sorry, n here, 77 minus 60, that will be 17, right? So n will be 17 divided by 17. It means क्या होगा? 17 1 is 70. So can I say n is equals to 1? Okay. So the value of n is 1. n की वैल्यू क्या मिली हमको? 1 मिली। एक्चुअली आपको फाइंड आउट करना है x and y. Okay. But with the help of m and n we will find that, right? So n मिला है, फिर हमको m फाइंड आउट करना पड़ेगा. So put n is equals to 1 in equation. Can you put this value in equation here? No, because here are x and y, right? So you have to put this value in 1 2 or 3. Okay, so I think this is easy to put, right? Okay, so put n is equals to 1 in equation first. What is first equation? This is 2m what minus 3n is equals to 15. This is equation, right? Okay, 2m minus 3n is equals to 15, correct? So what is the value? Value of n is 1. So we will write 2m as it is minus 3 into 1 is equals to 15. So can I write 2m minus 3 is equals to 15? Definitely yes. So 2m will be 15 plus 3. So 2m will be 18, right? Means m will be 9. Value of m is 9. How? When we divide this 18 by 2, we will get, okay, how? I will write here, m will be 18 divided by 2, and by dividing it, we will get 9. So value of m is 9 here. But we have to find the values of x and y, not m and n, right? So जिसका लिया था उसको देना है. अभी हमने किससे लिया था? 1/x को दिया था m, तो उसका दे दो जो भी है. So but you have to write but 1/x is equals to m and 1/y is equals to n. Okay, but हमारे पास तो क्या है? 1/x जिसका वैल्यू m है और 1/y जिसका वैल्यू n है. ये n और m का वैल्यू नहीं है, वो क्या है? 1/x और 1/y का. So you have to write 1/x क्या था? m. What is m? m is
9. So you have to write 9 here, right? And 1 upon y is equals to n. n मतलब क्या? 1, right? Okay. Now there is nothing at the denominator place, means there is 1, right? Here is also 1. So you can cross multiply. So x into 9, 9x is equals to 1 1 1. So x will be 1 upon 9. X will be 1 upon 9. And so y 1 y is equals to 1 1 1. So the solutions are 1 upon 9 comma 1. Okay. So understand at first how to solve. Actually you have not given in the form of ax plus by is equals to c. The first thing is that we have to convert them in the form. Then if there is need to multiply or divide, okay, so you can multiply or divide both, okay. So then आपको उसको उस फॉर्म में लाना है जहाँ पे हम एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन करके किसी एक का वैल्यू निकाल सकते हैं. उसका एक का वैल्यू निकालो पहले, वो वैल्यू फिर पुट करो, उसका जो पार्टनर है यम यन जो भी है वो निकलेगा. और सिर्फ यम यन वैल्यू तक ही सीमित नहीं रहना है, हमको आगे जाके हमारा जो वेरिएबल ओरिजिनल है एक्स एंड वाई उनका वैल्यू निकालना है. कई बच्चे क्या करते हैं यहाँ पर ही रुक जाते हैं, उनको लगता है हाँ आ गए सॉल्यूशंस. नो, दोज आर नॉट सॉल्यूशंस. ओके, सो सॉल्यूशंस आर which you have given. Okay, so take the screenshot, you will understand better. Okay, so now we will take the next question which is actually same with this question. Okay, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो उसको आप क्या करोगे, कंसीडर करोगे यम या एन में. और मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ भी तरकीब यूज करो, कोई भी तरकीब यूज करो, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर गलत आता है तो नीचे का पूरा गलत आ जाएगा. ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बेटर, यू हैव टू थिंक फॉर अ टाइम. आप थोड़ा सा टाइम भी ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई. सेकेंड 10 अपॉन एक्स प्लस वाई. अब ये थोड़ा सा गलत आए, अलग आया. कैसे अलग आया, यहाँ पे ही एक्स प्लस वाई आ गए, तो नेक्स्ट में आप इससे अलग कोई तो आ जाएगा, उसको हम अलग पकड़ेंगे. ओके, सो प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई, राइट. ओके, इज इक्वल्स टू 4. ओके, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. नाउ सेकेंड 15 अपॉन व्हाट, 15 अपॉन एक्स प्लस वाई. ये दोनों सेम ही आएगा, इसमें चेंज नहीं होगा. अगर होगा भी तो क्या होगा, मल्टीपल हो गए उसके, जिसको हम कैंसिल कर सकते हैं. आई थिंक इट इज गिवन इन लास्ट क्वेश्चन. -5 अपॉन एक्स माइनस वाई, what is equals to -2, is equals to -2. Okay, this is the question. Now 10 upon x plus y, 2 upon x minus y. आपको जैसे मैंने बताया था कि पहले एग्जांपल में हमने क्या देखा था, 5 अपॉन एक्स और 4 अपॉन वाई समथिंग था. तो उसको 5 को हमने क्या लिखा, 5 इंटू 1 अपॉन. तो उसको भी हम ऐसे ही लिखेंगे. मतलब कैसे लिखेंगे, कैन आई राइट 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई. यस, डेफिनेटली यस. सो प्लस 2 इंटू वट, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू वट, 4. जैसे का वैसे रहेगा. आगे क्या होगा, 15 इंटू वट, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2. दैट विल बी एज इट इज. आप उसमें अगर हमको हमने प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखोगे तो वहां पे 1 अपॉन एक्स 1 अपॉन वाई दोनों तरफ आएगा. अब यहाँ पे ये कॉमन आया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई. तो किसे कंसिडर करेंगे हम, उन्हीं को. सो सपोज दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. सपोज 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू n. हम यम और यन इन दोनों को ले रहे हैं, ठीक है. सो कैन आई से 10m plus 2n is equals to 4. This is equation first, right. I use m, 10 into m, 10m. I use 10, 2 into n, 2n, 4 will be as it is. Now this, how, 15m minus what, 5, okay, 5n is equals to what, -2 will be as it is. Equation number second, is it right? Okay,
10m 10 इंटू एम 2n, यहाँ पे 4 एज इट इज आया। यहाँ पे हमने 15 को लिखा था 15 इंटू 1/x+y। अब इसको हम ले रहे हैं यम, तो 15m आएगा, माइनस का माइनस, 5 इंटू 1 लिखा था, इसके बावजूद हम क्या ले रहे हैं, n ले रहे हैं, तो 5n आ जाएगा और -2 एज इट इज आएगा। ओके, सो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अब हमको इक्वेशन मिला है। हम क्या करेंगे, देखेंगे इसका मल्टीप्लिकेशन वगैरह होता है। 15 और 10 किसी एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे, तो हमें एक ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन, यहाँ पे वही हो रहा है, तो हम 5 और 2 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है एलसीएम क्या 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 है, तो आप एक काम करो, यहाँ पे n का जो कोएफिशिएंट है उससे मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन फर्स्ट को, और यहाँ पे n का लिया ना, तो यहाँ पे भी n का ही कोएफिशिएंट दूसरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए भेजो। मतलब क्या, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय, फर्स्ट को मल्टीप्लाई करो सेकेंड का जो भी वेरिएबल यूज करते हो वही वहां पे, मतलब इसका अगर ले रहे हो आप n का, तो n का ही लेना दूसरे बार में। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर रहे हो 5 से, एंड सेकेंड बाय, ओके, व्हाट, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5, इसको मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ओके, आपको समझ में आएगा कि क्यों लिया। ओके, और सेकेंड इक्वेशन को अगर मैंने 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, तो यही नंबर यहाँ पे आ जाएगा। ओके, सो मल्टीप्लाई सेकेंड बाय 2, अंडरस्टैंड एवरीवन। ओके, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 5 और सेकेंड बाय 2 बाय, अब मैं यहाँ पे अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ इस 2 को, पूरे को कर रहा हूँ लेकिन हमको एक कैंसिल करना है, तो 5 2 से क्या होगा 10 होगा, राइट। और यहाँ पे 5 है, 2 से मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 5 2 से 10 होगा, यहाँ पे पॉजिटिव 10 आएगा, यहाँ पे नेगेटिव 10 आएगा, बोथ कैंसिल्स, राइट। ओके, सो नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट इक्वेशंस, मींस फर्स्ट इक्वेशन क्या चेंज होगा, फर्स्ट इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 10 जा 50m प्लस 5 2 जा 10n इज इक्वल्स टू 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर थर्ड। एक्चुअली थर्ड एंड फर्स्ट बोथ आर इक्वल विथ ईच अदर, राइट। ओके, सेकेंड इक्वेशन को क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो 15 2 जा 30 वॉट m माइनस, ओके, इसको हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, 5 2 जा 10n इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4 माइनस 4, इक्वेशन नंबर 4। Actually first is equal with third and second is equal with fourth, right? Okay, now tell me what we have to do, addition or subtraction? Definitely, because opposite signs, right? Okay, so add equation third and fourth. Okay, add करो अब इसको, 50m plus 10n is equals to 20 and what, that is 30m minus 10n is equals to -4, cancellation होगा, 10n cancels 10n, right? Okay, 50 minus what is here, 50 minus क्या होगा, addition और subtraction? Definitely addition होगा, 50 plus 30 that will be 80m, और यहाँ क्या आ जाएगा, 20 minus 4 that will be 60, right? अब यहाँ पे हमको क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे आ रहा है 8m इज इक्वल्स टू 80m इज दैट 80m। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसी 16 को यहाँ पे लाते हैं, 16 5 80 और 5 आंसर कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली आपको क्या करना है, m विल बी एज इट इज 16 यहाँ पे, और ये डिवाइड करने को जाएगा, राइट। सो 16 1 जा 16, 16 5 जा, मीन्स m विल बी 1/5। Understand, value of m is 1/5, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, right? Okay, now put this value, put m is equals to 1/5 in equation, in which equation, which is easy, this is easy, so put here in equation first. Okay, in first, so what is m is 1/5, so here what is equation right at first, 10m plus 2n is equals to 4, so 10 into what is m is 1/5
plus 2n is equals to 4. That will be as it is. Okay, so now 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. यहाँ पे जो 2 है वहाँ पे वो आगे जाएगा यहाँ से यहाँ पे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये तो n 2 1 जा 2 रहेगा, मतलब यहाँ पे 2n एज इट इज आएगा. यहाँ का जो 2 1 जा 2 है वो आगे जाएगा, मतलब क्या होगा 4 minus 2 हो जाएगा. राइट, सो कैन आई राइट 2n is equals to 2 means n is equals to 1. अंडरस्टैंड और नॉट? ओके, यहाँ पे क्या हुआ 2 1 जा 2 हो गया, यहाँ पे 2 जो था वो 2 आगे गया, नेगेटिव हो चुका. राइट, ओके, सो 4 minus 2 दैट विल बी 2. 2n एज इट इज 2 ने उसको डिवाइड किया, 2 डिवाइड बाय 2 दैट विल बी 1. सो वैल्यू ऑफ n इज 1. ओके, now we have both the values m and n, so you have to write here, but हमको क्या चाहिए x and y, but 1 upon x plus y is equals to m and 1 upon x minus y is equals to n. Now put the values. Okay, so what is the value? M is 1 upon 5, so 1 upon x plus y is equals to what? 1 upon 5, right? And here 1 upon x minus y is equals to what? 1. अब हमको फिर से इक्वेशन मिलने जा रहे हैं. यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा, यहाँ पे एक इक्वेशन आ जाएगा. ओके, इसका कुछ नहीं, डिनोमिनेटर मतलब एक है. एक्चुअली ना आप एक बात यहाँ पे ध्यान से सुनो कि क्या आपको करना है. ये दोनों का न्यूमरेटर क्या है? 1 है. ओके, हियर इज 1, हियर इज 1. ओके, हियर इज ऑल्सो, दोनों का राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड. अगर न्यूमरेटर सेम है, अगर न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर में जो भी इक्वेशन क्रिएट हो रहा है, कैसे x प्लस वाई इक्वल्स टू 5 डायरेक्ट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. और अगर आपको चेक भी करना है तो कैसे चेक करोगे? देखो 1 इंटू एक्स, 1 इंटू वाई इज इक्वल्स टू 5 1 जा 5. राइट, और हियर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 1 जा 1. अब हमें पहले तो ये इक्वेशन दिए थे, हमने 1 2 उसका चेंज करके किए, फिर हमको मल्टीप्लाई करने की जरूरत पड़ी, हमने मल्टीप्लिकेशन करके 3 4 निकाला. अब यहाँ पे भी इक्वेशन आ रही है, x और y की वैल्यू नहीं मिल रही है हमको. ठीक है, सो वी हैव टू राइट हियर इक्वेशन नंबर 5 एंड इक्वेशन नंबर 6, एंड आई थिंक यू नो very well how to solve this. Again we have to add them. Okay, so we will write here add equation 5 and 6. 5 और 6 का आप एडिशन करोगे, अगर आप एडिशन करते हो तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा. ओके, सो टेक द स्क्रीनशॉट. I will clear this portion and then we will find the answer. Take the screenshot. Okay, यहाँ तक मैं क्लियर कर देता हूँ. क्लियर? ओके, सो एडिशन किया करना है हमको 5 और 6 का. सो व्हाट इज 5? x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. ओके, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, सॉरी फिफ्थ इक्वेशन. व्हाट इज सिक्स्थ? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू व्हाट इज देयर? 1. अब इसका एडिशन में y कैंसल्स y हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6 and you know better x is equals to 6 upon 2, it means 3. Value of x is 3. So again put this value in equation 5 or 6, you will get the other value, right? So what will be there? Put x is equals to 3 in equation. In which equation? Fifth equation. Fifth. What is fifth equation? The fifth equation is x plus y. X plus y is equals to what? 5. X plus y is equals to 5. तो यहाँ पे 3 का यूज करो x के इंस्टेड, क्या आ जाएगा? 3 plus y is equals to what? 5, right? Okay, so यहाँ पे आ जाएगा y is equals to 5 minus 3, so y will be 2. It means the solutions are 3, 2. So this is those are the steps to solve these types of question. Okay,
ओनली दिस इज लेंदी बट इट इज वेरी इजी। आपको स्टेप बाय स्टेप जाना है, कुछ भी गलती नहीं करनी है, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाएगा। ठीक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट टू अंडरस्टैंड। ओके, understand, it is very easy. Actually you have to understand this, that you have to convert at first step, you have to convert the equation into variable, then आपको वहां पे फिर देखना है कि एडिशन सब्ट्रैक्शन करके m और n का वैल्यू कैसे आ जाएगा। अगर एडिशन वहीं पे नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करो पहले, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करके m का वैल्यू निकालो, फिर n का निकालो या फिर n m का निकालो। n और m निकालने के बाद जो आपने सपोज किया था ना, उसमें आपका वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करना है, फिर उसको सॉल्व करना है। अगर वहां पे भी इक्वेशन आता है तो फिर इक्वेशन निकाल उसको 5 और 6 देना है, फिर उसको सॉल्व करना है। एक्चुअली दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन, अ लिटिल लेंथी क्वेश्चन, राइट? ओके, सो वी विल टेक द थर्ड क्वेश्चन। Okay, now question number 3. What is question 3? Question number 3 is 27 upon x minus 2, x minus 2, उसके बाद क्या है, प्लस 31 upon y plus 3, 31 upon y plus 3 is equals to 85. Okay, this is equation first. Okay, actually this is not equation. Okay, 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equals to 89. Okay, this is 89. Okay, is it in general form? No, this is not in general form. So the first thing is that we have to convert. How to convert? So you can say x minus 2, x minus 2, y plus 3, y plus 3. Both in both equation it is common. So can I write like this? 27 into 1 upon x minus 2 plus 31 into 1 upon y plus 3, right, is equals to 85. That will be as it is, right? And here क्या होगा यहाँ पे, 31 into 1 upon x minus 2 plus 27 into 1 upon y plus 3 is equals to 89, right? Okay, now check. 1 upon x minus 2, 1 upon y plus 3 is common in both equations, so I can replace them. How? Suppose 1 upon x minus 2 is equals to m, and 1 upon y plus 3 is equals to n. Okay, put the values. So 27 into 1 upon x minus 2, 1 upon x minus 2 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, m. So what will be 27m plus 31n is equals to 85. Question number first. Understand? Right. Okay, here क्या होगा यहाँ पे, 31m plus 27n is equals to 89. Equation number second. So can I say this equation is equal with I think 6th or 7th equation in practice set 1.1. I think there were some questions like this 49. आपको यहाँ पे क्या किया है, इसका वेरिएबल, इसका कोएफिशिएंट, इसको और इसको किया है, तो आपको क्या, आपने उसमें क्या किया था, एडिशन सब्ट्रैक्शन जो, और वहां पे जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू फिर से पुट करके आपको सॉल्व करना, राइट? तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले उसको मल्टीप्लाई, सॉरी, इसका एडिशन करना पड़ेगा. सो एड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड. ओके, सो ऐड करने के बाद क्या आ जाएगा, 27m प्लस 31n इज इक्वल्स टू 85. नीचे 31m plus 27n is equals to 89. We have to add. So what is addition? 7 plus 1 8. That will be 5. That will be as it is. So 58m plus 58n
is equals to 9 plus 5, 9 plus 5 14, right? Then 8 8 16, 16 carry 1 means क्या आ जाएगा यहाँ पे 17, 174, right? This is 174. Now 58, 58 and 174. Definitely this number is divisible by 58. Okay, 8 3s are 24. It means this is divisible by डिवाइड करने के बाद उसका 3 आ जाएगा. या फिर आप चेक भी करके लो, या फिर मेरा वो जो मेथड आपको बताया था मैंने कि 63 जा 180 हो जाएगा. और यहाँ पे कितना बचा है 2, ज़्यादा हमने 2 लिया ना, तो 2 3 जा 6, 180 में से 6 माइनस करने पर 174 आ जाएगा. सो डिवाइड बाय 58 से डिवाइड करने पर क्या आ जाएगा m plus n is equals to 174. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. ऐसा ही और एक इक्वेशन आने वाला है आफ्टर सब्ट्रैक्शन, राइट? सो वी हैव टू राइट हियर सब्ट्रैक्ट इक्वेशन. कौन सा इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं अभी? इसमें से कोई भी. ओके, फर्स्ट सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड. ओके, so what is second equation? You have to write at first. 31m plus 27n is equals to 89. यहाँ पे आ जाएगा 27m plus 31n is equals to 85. Now in subtraction we have to change the sign of second row, right? So minus minus minus, all are positive, all will become negative. So here 4m minus 4n is equals to 4. So divide by 4. So we will divide by 4, right? So what will be the equation? M minus n is equals to 1. Equation number 4. Now tell me what we have to do for 3 and 4. Definitely addition. So add equation 3 and 4. Okay, 3 and 4. 3 क्या है? m plus. Okay, actually here we are wrong. How? m plus n is equals to, when we divide this number we will get what? 3s are. Okay, so here 3. Okay, sorry for this. m plus n is equals to 3, and here m minus n is equals to what? 1. Okay, so n cancels n. 2m is equals to what? 4. So m is equals to 4 by 2. It means 2. m का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. करेक्ट है? फिर क्या करेंगे? We have to put this value to find n. So put m is equals to 2 in equation. यहाँ पे हम फाइंड आउट यहाँ पे भी डाल सकते हैं, लेकिन दैट विल बी इजी टू पुट इन 3 and 4. यहाँ पे भी डालो या फिर 4 में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ओके, सो वी विल पुट इन थर्ड इक्वेशन. इन इक्वेशन थर्ड, व्हाट इज थर्ड इक्वेशन? m plus n is equals to 3. So what is the value of m? m is 2. 2 plus n is equals to 3. n will be 3 minus 2. n will be 1. So we could find value of m and value of n, right? m is 2, n is 1. So यहाँ तक हम यहीं पे हमको नहीं रुकना है, क्योंकि हमें फाइंड आउट करना है x and y. So we have to use this value to find that x and y. How? Actually we have supposed here what? 1 upon x minus 2 is m. मतलब m का जो वैल्यू है यहाँ पे रखेंगे, राइट? ओके, और जो n का वैल्यू है वो यहाँ पे रखेंगे, और फिर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, राइट? ओके, अंडरस्टैंड? टेक द स्क्रीनशॉट. वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x and y next. Okay, so now, so I will clear this portion. Okay, I think that it will be sufficient to us. Okay, so now come, we have m and n. So but
व्हाट 1 अपॉन क्या उसका वैल्यू था 1 अपॉन x minus 2 I think, right? X minus 2, but 1 upon x minus 2 is equals to m. And what was the next? The next was 1 upon x minus 2 was the first thing, that is m. And क्या था next में आपको दिया था 1 upon y plus 3, right? y plus 3, इसको हमने क्या सपोज किया था n. सो उसकी जो भी वैल्यू उसको पुट कर दो वहां पे 1 अपॉन x माइनस 2 इज इक्वल टू व्हाट इज m इज 2 एंड 1 अपॉन y प्लस 3 दैट इज n मीन्स व्हाट 1. ओके, सो यहाँ पे हम एंड लिखेंगे. ओके, सो देयर इज नो डिनोमिनेटर मीन्स हियर इज 1, हियर इज ऑल्सो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, हाउ 2 into x, 2x, 2 2 जा 4 is equals to 1 1 जा 1, right? Okay, यहाँ पे and हाँ y 1 जा y, 3 1 जा 3 is equals to 1. So we will find here 2x will be 1 plus 4. Understand? This is negative 4. It will become positive, right? So 2x will be 5. It means x will be 5 upon 2. ये पहला वैल्यू आया x. Okay, आगे y is equals to 1 as it is, this 3 which is positive it will become negative. Okay, so y will be minus 2. This is second, means the solutions are 5 upon 2 and minus 2. Okay, for question number 3. Understand? So now take the screenshot to understand, and this is now only this, because you have taken the first screenshot. Okay, so this is important to you. Okay.